check. Hello all, good evening. We welcome you to a TSL match again at the Fatima Cricket Ground. The Super League being played at this wonderful ground, and we've got a very good match today. The Warrior Lions are locking horns with the Mumbai Vikings, and the news from the centre is that the Mumbai Vikings have won the toss. They've elected to bat first. This is your commentator Shaleen Gupta welcoming all the viewers once again, and the spectators as well who have come from their respective locations all the way to watch this match at the Fatima Cricket Ground. And Warrior Lions are bowling first, as we mentioned. Mumbai Vikings batting first. They've started off well. Is that a wide? This is the first over. We've lost a few deliveries due to some technical glitch on the live commentary, and we apologize for that. But we're live here. The first over has been bowled nicely, and we'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers. And we're back after the break. Pinaki and Mithil are the opening pair for the Mumbai Vikings. Naresh Munot had started off the proceedings with a new ball, and the captain Hitesh Bhayani coming into bowl. His first over, is sharing the new ball with Naresh Munot. Hitesh bowling his first delivery. Oh, and wonderful delivery. This time he's appealing for an LBW. Very close, and just have a look at the replay. That was such a wonderful piece of bowling right from the word go. Oh, that was so close. Don't know why he hasn't given that out. Probably the height, or maybe missing down the leg side. Very close call. That was a brilliant start by the captain himself, Hitesh Bhayani. Oh, and this time again taking it on the thigh pad, trying to pull that, not succeeding. Mithil, the opening batsman, the left-handed batsman. Hitesh Bhayani, wonderful piece of bowling and played nicely, but this is really tight bowling by the captain. That's a very good start by Hitesh. The first over was slightly expensive, especially because of that overthrow that went to the boundary. A poor throw by the keeper. He was trying to run the batsman now in the air, and oh, and that's a good shot. Eventually goes into the gap. Could have been a chance of a catch. Couple of runs taken easily by Mithil, and he's off the mark. That was nicely played. So Mithil is on 3. That's a good piece of bowling by Hitesh. That's the end of the second over. It's a good comeback by the captain Hitesh Bhayani.
Just have a look at the scorecard there. 8 for no loss after 2. That's a good start by both the teams. In fact, Naresh Manoj with his next over. That's a good start and a wonderful stop by the short third fielder. Seems to be Yash Thadeshwar. Coming in with his next delivery. It should be a wide, way outside that wide mark. Did swing a lot as well, so an extra added to the tally. What a delivery by Naresh Munot. Brilliant stuff. The batsman completely beaten. Pinaki there. Oh, and that's a peach. Absolute brilliance shown by the bowler there. Perfect line. An impeccable length. Swinging at the right time. In the corridor of uncertainty. And that's how you need to bowl. With the new ball, youngsters watching can learn here. All these experienced players. Oh, and that's a similar delivery, but this time he was ready for that. Placed it really well towards the third man for a single. So Pinaki and Mithil, they've started off nicely. That's a good shot, a good delivery, but the swing taking it towards the leg side and could be a couple of runs here. Good running between the wickets by Mithil and Pinaki. Wonderful stuff. That's a good delivery. Again, bowling it in the right channel and a dot. So good comeback by the bowler. That's a brilliant delivery and trying to take the quick single, and they succeed as well. That was a good call by Pinaki, and he was running towards the danger, and that's the end of the third over. 13 without loss. We'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers.
That's another good delivery to start his second over. Hitesh Bayani, the captain of Warrior Lions. Mumbai Vikings being led by Amandeep Chadda. Oh, and this time it seems he'll be out. Yes, absolutely. Wonderful piece of bowling there. And caught in front. Brilliant delivery again. Hitesh Bayani has been on the money right from the word go and probably would have hit the leg stump. We'll show you the replay in the slow-mo this time. Trying to play it across the line. Oh, very close call, but seems the leg stump would definitely have got some contact with the ball had the pad not been in the way. So definitely a good decision by the umpire. And this is really good bowling by Hitesh. And the captain gives the breakthrough to his team, leading from the front. 13 for 1. Now, Mumbai Vikings, after they won the toss, selected to bat first. We'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers. Mithil has gone back to the pavilion after some really good bowling by Hitesh Bayani. We'll be right back. Won this time. Full delivery and a single taken nicely by Pinaki. That's the 5th delivery in this over. And Ritesh, the new batsman, is off the mark on the very first delivery. Hitesh Bayani is giving the breakthrough to his team. This is really good stuff by the captain of the Warrior Lions. Oh, and this time, a brilliant ball again. The consistency is the key here for the captain, Hitesh Bayani. He's bowled so well in his first 2 overs of his spell. 4 overs have been bowled, 15 for 1. We'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers.
Naresh Manot coming to bowl his next over. He starts off really well. Another wonderful delivery outside the off stump. Pinaki trying to play that but missing that completely. Would that be a wide? Yes, the umpire says and signals that a wide. That was definitely outside that comfort zone of the umpire. So another run added to the tally, courtesy that extra delivery in the form of a wide. And that's a good shot, but he's missed that. Santosh Palve has a lot of tapes around his hand. A very impact player in this lineup of Warrior Lions. But he misses that and fumbles it. A single taken, an extra run given there. And Ritesh back on strike. So the left-hander once again being introduced in the lineup after Mithil was out. He was also a lefty. That's a wonderful delivery and played really well with the straight bat by Ritesh. Another dot. Naresh has bowled a good over till now, only 2 of the over. 3 deliveries he's bowled, 3 left in this over. Oh, and this time he's gone. What a delivery. Wow. A peach of a delivery. A Jaffa. Couldn't have been a better length to bowl at. Just have a look at the line as well. Absolute peach that was. You don't get to see those deliveries often. And that is why I say youngsters watching can learn the kind of bowling with a new ball you have to do. Naresh Manot is definitely a very good example of that. What a delivery that was. Wow. No chance for Ritesh. There was a slight gap between the bat and the stumps, and he identified that gap brilliantly, and the second wicket down on the score of 17 for 2. What a delivery that was. We'll show you the replay once again. A peach of a delivery. Youngsters watching can learn how you have to pitch the ball, where you have to pitch the ball. What a line. Probably one of the best deliveries that we've seen in this TSL. And we'll take a quick break and be back soon. Naresh Manot deserves all the applause and the credit for this wicket. We'll be back after a short break. Stay tuned, viewers. 17 for 2. Mumbai Vikings in slight trouble in the first 5 overs in this innings. Naresh Manot bowling to the new batsman. Oh, and this time it will be wide. So missing the line completely. The captain Amandeep Chadha
He's come to bat. A lot of responsibility on his shoulders. Oh, and that's a good delivery. He's played well. Amandeep there, playing with a straight bat and ensuring that there's no harm to the score. Naresh coming to bowl his next delivery. Oh, and that's a wonderful piece of bowling. He's played it well again, Amandeep. But they need to save wickets. That's the end of the 5th over and the score is 18 for 2 after 5. And we'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers. We're back after the break and Jfsc Tsl coming to bowl his first over, the left arm spinner, a brilliant spinner this guy is. Strike is Pinaki, 8 of 12 deliveries, started well Pinaki. That's a good start by Yash. A dot played towards the short third. Oh, and that's a wonderful delivery. He's missed that. Trying to cut that and play late. Missing that completely, Pinaki. Oh, he's dropped him. What has he done here? Trying to hit the big one, missed that completely. Just have a look at that. Has he dropped it? Oh yes, that was a simple catch. Relatively simple catch, but Pinaki gets a single. He was trying to hit the big one. Just coming in to bowl his next delivery. Oh, and he's got him. He's cleaned him up. Brilliant piece of bowling by Jfsc Tsl. Amandeep Chadda misses that completely. That was slightly a quicker delivery. Just have a look at that. Oh yes, that was a quicker one. Probably the arm ball. Brilliant piece of bowling. Aman has missed that. And his off stump has been castled. Just have a look at that once again. A lot of action in this over. A catch dropped and then a wicket. And the third wicket down for the Mumbai Vikings, 19 for 3. And we'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers.
19 for 3, a lot of trouble for Mumbai Vikings here. Just Thadeshwar gets his first wicket and Abhijit on strike for the first time. That's a wonderful piece of bowling again. Started off brilliantly to the new batsman as well. Yeah, seasoned campaigner this guy, Just Thadeshwar. That's a short delivery, played well this time towards the deep square leg. Could be a boundary here. That is a boundary, brilliantly played by Abhijit. What a way to get off the mark on just his second delivery. Such a wonderful piece of batting. That's the end of the 6th over. 23 for 3 after 6, and we'll take a quick break and be back soon. And we'll be back with the Hindi commentary now. Stay tuned, viewers. स्वागत करना चाहेंगे फिर से अपने सभी दर्शकों श्रोताओं का इस ब्रेक के बाद और एक नए ओवर की शुरुआत। मुंबई वाइकिंग्स 24 पर 3, 6.1 ओवरों में, और मैं आपका कमेंटेटर शालीन गुप्ता एक बार फिर से आपके साथ जुड़ गया हूं हिंदी कमेंट्री लेकर। मनीष शाह आए अपना पहला ओवर डालने और ये अपील कर रहे हैं एलबीडब्ल्यू की, और ये आउट दे दिया है। वाह, तारीफ करनी होगी यहां पर, बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है। चौथा विकेट गिरता हुआ यहां पर, और एक खराब शॉट, जी हां, क्रॉस द लाइन खेलने गए और इसीलिए सामने पकड़ लिए गए और अंपायर ने आउट भी दे दिया है। 24 पर 4 हो गया है स्कोर अब। मनीष शाह ने आते ही जबरदस्त गेंदबाजी का नजारा दिखाया है, और स्लोमो में आपको रिप्ले दिखाएंगे। जी हां, सीधी गेंद को अगर आप अक्रॉस द लाइन खेलेंगे तो अंपायर को आप मौका देंगे कि वो उंगली उठाकर आपको पेविलियन जाने के निर्देश दें, और यही हुआ इस बार। पगबादा आउट हो गए एलबीडब्ल्यू, और 24 पर 4 हो गया स्कोर। यहां पर खासी मुश्किल में मुंबई वाइकिंग्स के बल्लेबाज और उनका दल। आशीष खेडेकर आए हैं नए बल्लेबाज, उन्हें साथ देना होगा पिनाकी का, यहाँ पर जो डटे हुए हैं अभी भी 10 पर हैं। हालांकि ज़्यादा रन नहीं बनाए क्योंकि 24 तो रन ही हुए हैं, और बच गए पहली गेंद पर। क्या जबरदस्त गेंदबाजी है ये, बहुत बेहतरीन ये गेंदबाजी मनीष शाह के द्वारा। पहली गेंद पर अभी एक विकेट और हो जाता, लेकिन अंतिम क्षण में आशीष खेडेकर ने सही समय पर बल्ला गेंद के सामने ला दिया, वरना यहां 5 हो सकते थे। 24 पर 4, बढ़िया गेंदबाजी एक बार फिर से, और इस बार लेकिन 1 रन मिलेगा। और ये बहुत ही खराब क्षेत्र रक्षण, बहुत ही लचर ये प्रदर्शन। ये देखिए, जहां 1 रन होना चाहिए था पैरों के बीच से जाने दिया, 4 रन मिल गए वहां पर। बहुत ही लचर क्षेत्र रक्षण यहां पर, ये देखिए। ये तो बेसिक्स हैं, इसमें आप गलती नहीं कर सकते।
बढ़िया शॉट आशीष का, खाता खोला चौके से और अब एक रन लिया इस बार। मनीष का पहला ओवर बहुत ही बेहतरीन, अभी तक 1 विकेट ले चुके हैं और खराब क्षेत्र रक्षण के चलते एक चौका भी उनके ओवर में गया, लेकिन गेंदबाजी बहुत सही डाली है। पिनाकी ने अच्छे अंदाज में खेला, उसे एक भी रन नहीं आना की और ओवर की समाप्ति 7 ओवर के बाद स्कोर 29 रन 4 विकेट के नुकसान पर। एक विराम लेकर वापस जुड़ेंगे आप सभी के साथ, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद। यश का अगला ओवर, बेहतरीन शुरुआत यहां पर एलबीडब्ल्यू की अपील, लेकिन शायद बल्ला लगा था। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास और क्या ये सीमा रेखा के पार है? बड़ा छक्का है ये तो, जबरदस्त प्रहार, 6 रन। काव कॉर्नर की तरफ खेला, बेहतरीन शॉट और यश जैसे गेंदबाज को इतना लंबा छक्का मारना आसान नहीं। यहां तारीफ आशीष खेडेकर को की करनी होगी। क्या जबरदस्त प्रहार 6 रन के लिए, जबरदस्त अंदाज में उसे उठाया। अगली गेंद और ये विकेट कीपर से चूक होती हुई यहां पर, और ये 4 रन और ये भी वाइड है, तो 5 रन का एक तोहफा यहां पर उपहार स्वरूप दे दिया गया है। जितनी भी तारीफ की जाए आशीष खेडेकर की कमी, ये दबाव ही है जो यश थड़ेश्वर पर आया, इसलिए ये गलती हुई उनसे। विकेट कीपर को नहीं ज्यादा जिम्मेदार ठहरा सकते हैं इसके लिए। फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास और बड़ा छक्का एक बार फिर से, वाह क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं ये। 2 छक्के इस ओवर में और क्या उठाते हैं सीधे बल्ले से आगे की गेंदों को। जबरदस्त बल्लेबाजी आशीष खेडेकर की, लग ही नहीं रहा है कि 4 विकेट गिरे हैं तभी आए हैं। एक बार फिर से आपको दिखाएंगे किस अंदाज में इन्होंने स्लोमो में देखिए छक्का, ये देखिए क्या जबरदस्त प्रहार, बहुत बड़ा छक्का, ये हवा में भी बहुत ऊपर, गगनचुंबी और लंबा छक्का भी। ये देखिए, जी हाँ 8वां ओवर चल रहा है और अचानक से स्कोर हो गया है 46 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आशीष खेडेकर 6 गेंदों पर 17 रन, लगभग 300 का स्ट्राइक रेट इनका। उससे अच्छी तो बल्लेबाजी हो ही नहीं सकती है, वो भी इतने दबाव में जब 4 विकेट गिर चुके हैं आप। आशीष वापस स्ट्राइक पर और इस बार ऊपरी किनारा लगा बल्ले का और 1 रन मिलेगा। और ये ओवर की समाप्ति, एक महंगा ओवर, 20 रनों का ये ओवर, 49 पर 4 8 ओवरों के बाद और रन औसत 6 के ऊपर पहुंच गए। एक विराम लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।
मनीष शाह आ रहे हैं, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास और शायद ये बड़ा छक्का है। जी हां, 6 रन। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं आशीष, किसी को भी बख्श नहीं रहे हैं और इसी शॉट के साथ 50 रन पूरे हुए इस दल के। जबरदस्त काउंटर अटैक मुंबई वाइकिंग्स का। आशीष खेडेकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए बड़ा छक्का है। देखिए मनीष की गेंद पर, पहली गेंद ही है और जितनी भी तारीफ की जाए इस खिलाड़ी की कम। लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र कोशिश तो की लेकिन बहुत ऊपर से गई थी गेंद उनके, तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। अच्छी वापसी मनीष की। और ये बढ़िया शॉट बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में, 2 रन आसानी से मिल जाएंगे ऐसा लग रहा है। जी हां, जबरदस्त बल्लेबाजी आशीष की। छा गए हैं, 27 पर आ गए सिर्फ 10 गेंदों के बाद। क्या बल्लेबाजी और क्या काउंटर अटैक है। 24 पे 4 के बाद इस तरह की बल्लेबाजी हम अमूमन इसकी अपेक्षा नहीं करते हैं, लेकिन क्या जबरदस्त आक्रामक बल्लेबाजी। मांसपेशियों में थोड़ा खिंचाव लग रहा है आशीष को, ऐसा प्रतीत हो रहा है हमें यहां से देखकर। और ये फुल टॉस गेंद, खराब गेंद, इसको तो मारना ही चाहिए 4 रन के लिए। जी, और ये बच गया लेकिन चूक भी हुई क्षेत्ररक्षक से, तो 2 रन मिल गए। जी हां, ऐसी बल्लेबाजी कर रहे हैं कि दबाव बन रहा है गेंदबाज पर खुद ही। और ये गेंद, और ये बोल्ड हो गए हैं। जबरदस्त वापसी, यहां पर क्या जबरदस्त अंदाज में बदला लिया है मनीष ने। देखिए, जी हां, की तारीफ करनी होगी। दबाव में थे लेकिन उसके बावजूद जबरदस्त वापसी। क्या कमबैक है यहां पर गेंदबाज का। बहुत ही बढ़िया मैच हो रहा है यहां पर। अरे 5 विकेट गिरता हुआ आधी टीम, आधा दल वापस जा चुका है 59 के स्कोर पर। और एक विराम लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ एक बार फिर से, लेकिन एक बार फिर से आपको रिप्ले दिखाएंगे, इस बार स्लो मोशन में देखिए। बहुत ही तेज गेंद ये पड़ के और तेजी से निकली। स्किड कराया गेंद को और ऑफ स्टंप ले लिया बल्लेबाज का मनीष शाह। इनका दूसरा विकेट। ये विराम लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जुगल सुबानी स्ट्राइक पर, बहुत बढ़िया गेंद पहली गेंद के हिसाब से। और एक बेहतरीन ओवर की समाप्ति। भले ही छक्का पड़ा, 10 रन आए इस ओवर में, लेकिन बहुत बड़ा विकेट ले लिया आशीष खेडेकर के रूप में मनीष ने। और 2 विकेट ले चुके हैं मनीष ने 2 ओवरों में। 9 ओवर में 59 रन 5 विकेट के नुकसान पर। एक विराम लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। प्रणय जैन आए नए गेंदबाज। बढ़िया शॉट और 1 रन लेंगे आसानी से।
टर्ने की अगली गेंद और ये बड़ा शॉट खेलने का प्रयास जुगल का, बच गए यहां पर। अच्छा शॉट नहीं था, बल्ले पर शायद सही से आई नहीं थी। एक ही रन मिला लॉन्ग ऑन की दिशा में। और ये छोटी गेंद टर्ने की, बढ़िया शॉट पिनाकी का। एक ही रन मिलेगा वहां पर। क्षेत्र रक्षक तैनात है पहले से ही डीप मिड विकेट के क्षेत्र में। एक रन लिया। फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन एक ही रन मिलेगा। लॉन्ग ऑफ पर क्षेत्र रक्षक ने अच्छा क्षेत्र रक्षण किया एक रन के लिए। सीधे खेला शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ, एक भी रन नहीं। बढ़िया शॉट और क्षेत्र रक्षण की कोशिश वहां पर, लेकिन चूक हुई और 2 रन मिल गए। और ओवर की समाप्ति 10 ओवर में 65 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और अंपायरों के निर्देश ड्रिंक्स ब्रेक के एक विराम लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।
शाह का तीसरा ओवर, बेहतरीन शॉट पिनाकी के द्वारा, एक ही, और ये एक बार फिर से चूक हो गई। बहुत ही लचर क्षेत्ररक्षण हो रहा है। 1 रन का 4 रन ये दूसरी बार हुआ है इस पारी में। ये देखिए ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी लंबी गेंद और उसे खेला बेहतरीन अंदाज में, लेकिन ये चौका नहीं होना चाहिए था। ये क्षेत्ररक्षक को भी पता है। बहुत ही खराब क्षेत्ररक्षण और धीमे धीमे स्कोर बढ़ रहा है। तारीफ करनी होगी मुंबई वाइकिंग्स की, अच्छा कमबैक यहां पर कर रहे हैं, जबरदस्त वापसी। अभी तक 70 हो गया स्कोर। बेहतरीन ड्राइव और एक बार फिर से हाथ में गेंद नहीं आई, हालांकि रन नहीं हुआ इस बार। बहुत ही अच्छा क्षेत्ररक्षण नहीं किया है आज वॉरियर लायंस ने। कैच भी छोड़ा, एक बहुत ही आसान कैच था, उसे छोड़ दिया शुरुआत में। हालांकि गेंदबाजी बहुत अच्छी की है। अच्छा शॉट, लॉन्ग ऑफ की दिशा में 1 रन दिया। अच्छी गेंदबाजी और जुगल ने 1 रन यहां से चुरा लिया। बढ़िया बल्लेबाजी। पिनाकी जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। आज के मैच के संदर्भ के में बात करें तो 20 पर आ गए हैं। 25 गेंदें खेली उन्होंने, समय लिया है पूरा, लेकिन 5 विकेट भी गिर गए हैं, तो खड़ा होना भी जरूरी है विकेटों पर। आशीष खेडेकर ने आके ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, इसलिए स्कोर 70 तक आया है। बेहतरीन शॉट, अब देखिए खुलकर खेल रहे हैं और इस बार 1 ही रन। जी हाँ, अपनी गलती से सबक लिया यहाँ पर और इस बार चौके की तरफ नहीं जाने दिया गेंद को। ओवर की समाप्ति 11 ओवर के बाद स्कोर 73 रन 5 विकेट के नुकसान पर। विराम लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। प्रणय आए अपना अगला ओवर लेके। बढ़िया शॉट पिनाकी के द्वारा, 6 रन हो गए ऐसा लग रहा है। जी हां, जबरदस्त प्रहार। क्या ये छक्का है चौका? ये तो अंपायर, क्या शॉट है ये। जी हां, ये तो 6 है, बड़ा छक्का है ये। बेहतरीन शॉट, स्लोमो में दिखाएंगे आपको। ये शायद आज का सबसे बेहतरीन शॉट है, जिस तरह से लेग स्पिनर को खेला है ऑन साइड पर, सीमा रेखा के पार, 6 रन, बेहतरीन छक्का। और पिनाकी अब हाथ खोल रहे हैं जबरदस्त अंदाज में। ये देखिए अगली गेंद, वाह अद्भुत बल्लेबाजी है। 4 रन, जॉस बटलर बन गए हैं ऐसा लग रहा है। जबरदस्त बल्लेबाजी, ऑफ स्टंप की तरफ थोड़ा सा आए और उसे खेल दिया। शॉट फाइन लेग से भी फाइन, 4 रन के लिए। जबरदस्त बल्लेबाजी पिनाकी के द्वारा, इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं और बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी हैं और अभी तो फॉर्म में आ गए हैं पूरी तरीके से। शुरुआत में समय लिया क्योंकि विकेट गिर रहे थे दूसरे छोर से, और बहुत समझदारी भरी बल्लेबाजी है। प्रणय जैन का ये महंगा ओवर 2 गेंदों में 10 दे चुके हैं, क्या वापसी कर पाएंगे? मुंबई वाइकिंग्स 83 पर आ गए हैं। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी है, अच्छी गेंद भी। तारीफ करनी होगी पिनाकी की, यहां पर 31 पर आ गए हैं। जब जब मुंबई वाइकिंग्स के विकेट गिरे हैं, उन्होंने काउंटर अटैक, आक्रमण करके ही वापसी करने का प्रयास किया। इस बार बच गए, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था, फ्लाइट में चकमा खा गए थे। ये देखिए अच्छी गेंद, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी। यहाँ लालच में आ गए, गेंद की फ्लाइट को देखकर ऐसा लगा फिर से एक बड़ा छक्का लगाएंगे, लेकिन पूरी तरीके से चूक गए। प्रणय की तारीफ करनी होगी यहाँ पर। जी अच्छा गेंदबाज वही है जो भले ही छक्का पड़ा है या चौका, लेकिन एक स्पिनर के तौर पर
अपने सबसे बड़े हथियार जो कि फ्लाइट होता है उसे ना भूले। और प्रणय की यहाँ पर मैं तारीफ करना चाहूँगा, 6 और 4 खाने के बावजूद अगर आप फ्लाइट दे रहे हैं तो आप उच्च स्तरीय गेंदबाज हैं। और ये तेजी से 1 रन लेने का प्रयास, लेकिन सही समय पर वापस भेजा पिनाकी ने। और ये साझेदारी भी अब अच्छा कर रही है जुगल और पिनाकी की। छोटी गेंद, बढ़िया कट किया, इसे 1 रन मिलेगा। स्वीपर कवर मौजूद है पहले से ही और 2 के लिए आ गए हैं। जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट्स, तारीफ करनी होगी यहां पर जुगल की। दूसरे रन के लिए धकेला एक दूसरे को पिनाकी और जुगल ने। और ओवर की समाप्ति, 12 ओवर के बाद स्कोर है 85 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और एक विराम लेकर वापस आप सभी के साथ जुड़ेंगे और अब अंग्रेजी कमेंट्री लेकर फिर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। Tsl coming to bowl his next over. He started off well. We're back with the English commentary. That's a good shot, cut really nicely towards the sweeper once again for a single. Joel is playing a wonderful hand here in this partnership, playing the perfect second fiddle role, just giving the strike back to Pinaki, and that is what is required. The run rate has reached a good level of 7 and over. Oh, he's got him, it seems. He's cleaned him up. Brilliant bowling. And he's trying to play across the line. Oh, and he's cleaned him up. Wow, this is really good bowling. Jugal Sobani. You were just mentioning that he's played such a wonderful knock till now, but he's lost. Oh, it's Pinaki. Oh, that's a big wicket. Beg your pardon, that is Pinaki. He's lost patience after playing such a wonderful knock. 33 of 33, what a knock he was playing. But Yash Thadeshwar cleans him up, and at the end of a good partnership, and Pinaki goes back to the pavilion. 86 for 6 now. And Yash gets his second wicket. We'll take a quick break and be back from station viewers. Yash with his next delivery, the new batsman on strike. That's a wonderful start, and he plays it well. Soham coming on. The fall of wicket coming at number 8, and that's a good start by Soham. He's off the mark. Just a second delivery, a single taking, played it well towards the mid wicket.
Oh, and he's appealing for a caught behind here. And the umpire not interested. There seems to be a confusion. The umpire saying he did not hear any noise. Maybe a sound of the edge. The bowler not happy. It seems they have decided to discuss it with the leg umpire. And that's the end of the 13th over, 87 for 6. And we'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers. Kaushal Trivedi introduced into the attack. Starts off really nicely with the ball just outside the off stump, a perfect length as well to start his spell. That's a good delivery again. 2 dots in a row. That's a very good start by Kaushal. In the air this time, and a good shot in the gap as well. 2 runs would be easily up for grabs here. Yes, 2 taken, the couple. That was a good shot in the air through the extra covers. The long off did well but could not prevent the second run. Kaushal Trivedi has bowled well in this over till now. This is his first over. Oh, and that's a very good run taken. Soham is playing a brilliant knock here. He's just started but he's so clear with his shots and finding the gaps really nicely. 90 for 6 now. This is the 14th over. Oh, and that's a wonderful shot, but straight to the fielder. There is a single taken by both these players. The short third did well, but a single was definitely on the cards. And Soham back on strike. And this time just a single. Played it really well to end the over. 14th over has been bowled. 92 for 6. Mumbai Vikings, they've come back really nicely after they lost 4 wickets for just 24 runs on the board. We'll take a quick break again and we'll be back soon. Stay tuned, viewers.
Naresh Manoj coming to bowl his last over. This is his fourth. Oh, and that's a good start. He's bowled such a wonderful length today. Normally he's a very good bowler. One of the best in the circuit without doubt. And the key is the length at which he bowls. The line has always been good in his case, but the length is what does the damage as far as the batting team is concerned, and Naresh Manoj is so good at that. Coming to bowl his next delivery. That's a good shot by Jugal, a single taken quickly, trying for a run out. Oh, and he's missed that. Manish was in the short cover position. That was a good try by him as well, but let's have a look at that. Oh, and that was close. Probably would have been really close had that hit. Oh, that was definitely a close call. That's a wide for sure. The umpire doesn't hesitate to stretch his arms. This has been his problem to an extent. He's been bowling wides almost all his overs. You can't afford to bowl so many wides in a T20 game, especially when you have got just 4 overs to bowl as a bowler. Extra runs and extra deliveries is both what you give to the other team when you bowl wides. Oh, that's a good shot. Soham is playing some really good shots this time, a single only. But that was a good shot. Playing with a straight bat, that's what the best thing about Soham is. Just a single, the long off does well. Oh, and this time Jugal trying to hit the big one, not succeeding, but probably Soham will come back for the second, it seems. No, just a single. Hitesh Bayani is a very good fielder. He's got a strong arm as well. And that's another single taken by both these players. Oh, that's a wonderful shot. Will that be a boundary? It seems there is no cover out there. What a shot by Soham. And that's the 100 up as well. Brilliantly played. Just comes down the track. Just a step ahead. And oh, and that's a very good shot. Just have a look at that. There was a mid wicket, but no deep in wicket. And it's a wonderful piece of batting. We show you the replay once again. This is really good batting. He's taking him on now. Soham. Very effective shot, especially when there is no cover on the on side. One delivery still remaining in this over. 9 already of the over. An expensive one till now. Oh, and that's a wonderful shot again by Soham. Could be another boundary. This guy is on fire. But that's a very good chase by the fielder. And a couple taken. And that's the end of an expensive over. Probably 1 run short by Soham this time. Yes, the umpire signals a short run. And that's the end of the over for Naresh Manoj and his spell as well. Just a single added to the tally, because that was a short run by the batsman. And that's the end of the over. 15 overs have been bowled, 102 for 6. We'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers.
What a shot that is on the first delivery of this over. Jugal Sobhani hitting it brilliantly. Just have a look at that. Make some room for himself. What a shot. The long off. Trying his best but couldn't stop that. First delivery sent packing into the fence. What a shot by Jugal. Kaushal bowling his second over the next delivery. In the air this time. And straight to the fielder, but a single taken. Manish trying to run him out, but he just realizes that he would be in a squeeze easily. And back on strike is Soham. 12 of 11 deliveries, and Jugal 12 of 12 deliveries. This is a really good partnership again by both these players. That's a good shot. In the gap as well. Will they come back for the second? No, just a single. There's a fielder out there. Yash Tadeshwar as well. Oh, this time a wonderful shot again. Manish does really well. Didn't allow even a single to happen there. That was a good shot by Jugal, but straight to the fielder. Needs to hit this in the gap. Oh, Kaushal bowling nicely. Jugal trying to make room on every delivery. Trying to shuffle across the leg stump and then free his arms on the offside, but this time Kaushal picking it up nicely. Just bowling in the right areas, slightly outside the off stump. Oh, this time again he does the same. Straight to the fielder, a quick single taken, and this time a chance of a run out. No, Manish has been doing well in the covers position, but that's the end of Kaushal's second over. 16 overs have been bowled, 109 for 6, the run rate 6.81. We'll take a quick break and be back soon. And we'll be back with the Hindi commentary for the last 4 overs in this innings. Stay tuned, viewers. हितेश भयानी आए हैं एक बार फिर से गेंदबाजी डालने. हवा में खिला हुआ शॉट एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में 2 रन के लिए आना चाहेंगे और आप भी जाएंगे ऐसा लग रहा है. जी हाँ, बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट्स और जुगल सुभानी क्या ज़बरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं इस मैच में. पहले उन्होंने पिनाकी के साथ बहुत बेहतरीन साझेदारी की और उसके बाद अब सोहम के साथ ज़बरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं और 16 पर आ गए हैं 17 गेंदों के बाद. सोहम ने भी बहुत बढ़िया साथ निभाया है और ये 17वां ओवर शुरू हो चुका है. डेथ ओवर्स में आ गए हैं हितेश भयानी. तीसरा ओवर डालते हुए कप्तान है इस दल के. बढ़िया शॉट जुगल के द्वारा, एक ही रन लॉन्ग ऑफ पर और एक्स्ट्रा कवर्स पर बेहतरीन शॉट खेले हैं आज जुगल ने और बहुत ही ज़्यादा ये प्रभावी पारी है इस मैच के संदर्भ में अगर बात करें. और हवा में खेला इन्होंने लेकिन बच गए. 1 रन भी मिल गया मिड विकेट की तरफ खेलकर. अगली गेंद और ये हवा में फिर से खेला लेकिन इस बार गैप में है. क्या बल्लेबाजी हो रही है. 4 रन, बेहतरीन शॉट, जबरदस्त बल्लेबाजी यहां पर. जुगल सुभानी देखिए लेग स्टंप से उठाया इस गेंद को सीधे बल्ले से, बहुत ही जबरदस्त अंदाज में. इसे परफेक्ट गैप कहते हैं. वहां पर भेज दिया ऐसे सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए.
17वां ओवर, स्कोर है 117 पर 6। जुगल की जबरदस्त बल्लेबाजी उनके दल को एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ ले जा रही है। एक समय 24 पर 4 हो गया था स्कोर, और उसके हिसाब से देखें तो क्या वापसी की है मुंबई वाइकिंग्स ने। बस फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, और इस बार रनआउट की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि रन नहीं ले रहे हैं जुगल। वॉरियर लायंस को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया आज मुंबई वाइकिंग्स ने टॉस जीतने के बाद। 117 पर 6 हो गया स्कोर हालांकि, और बहुत ही बेहतरीन वापसी, जिस तरह से 4 विकेट गिरे थे शुरुआती ओवरों में। बढ़िया शॉट, इस बार क्या है, चौका होगा। एक ही रन थर्ड मैन की दिशा में। ओवर की समाप्ति यहां पर 17 ओवर के बाद 118 रन 6 विकेट के नुकसान पर, और एक विराम लेकर वापस जुड़ेंगे आप सभी के साथ। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद। कौशल त्रिवेदी आए अपना तीसरा ओवर लेकर, और 1 रन मिला, अंदरूनी किनारा लगा बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। जुगल ने 1 रन लिया और 23 पर आ गए जुगल 22 गेंदों के बाद। सोहम वापस स्ट्राइक पर। अच्छी गेंदबाजी और बढ़िया शॉट, लेकिन सीधे क्षेत्र रक्षक के हाथ में। हालांकि 1 रन तेजी से ले लिया और कोई भी बैकअप नहीं है। बहुत ही खराब क्षेत्र रक्षण ये, और जरूरत ही नहीं है। जब 1 रन हो गया है तो आप क्यों उसे फेंक रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। लेकिन यहां पर अतिरिक्त रन दे दिया है फिर से। क्षेत्र रक्षकों ने आज बहुत गलतियां की हैं क्षेत्र रक्षण के दौरान इस पूरी पारी में। जी हाँ, ये गलतियां महंगी पड़ सकती हैं इस मैच के संदर्भ में अगर बात करें तो। बढ़िया शॉट, लॉन्ग ऑफ की दिशा में 1 रन। बढ़िया शॉट और अच्छा क्षेत्र रक्षण, 1 रन लेकिन नहीं रोक पाएंगे संतोष पलवे। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, चूक गए सोहम, डॉट गेन। और इस ओवर की आखिरी गेंद 18वां ओवर ये। और 1 रन लिया आसानी से खेलकर पॉइंट के क्षेत्र में। ओवर की समाप्ति 18 ओवर के बाद स्कोर 124 रन 6 विकेट के नुकसान पर, और एक समय 24 रन पर 4 विकेट थे और अब 124 पर 6। एक विराम लेकर वापस आएंगे। बन रही है हमारे साथ, धन्यवाद।
और ये यश थडेश्वर का आखिरी ओवर, इनका चौथा ओवर, पारी का 19वां। बढ़िया शॉट खेला है, लेकिन क्या ये बड़ा शॉट है? और एक ही रन। बेहतरीन गेंदबाजी यश के द्वारा। और ये बेहतरीन गेंदबाजी, डॉट गेंद एक बार फिर से। 19वें ओवर में 2 डॉट निकाल दिए हैं। तो 25 पर 7 और रविराज शेट्टी आए हैं बल्लेबाजी करने, और अभी तक एक गेंद भी सही से नहीं खेल पाए। 4 डॉट निकाल चुके हैं। सुबानी रिटायर्ड आउट हुए हैं, क्या 2 रन के लिए इस बार वापस आना चाहेंगे, और रविराज आ रहे हैं वापस। अच्छा शॉट, और ये बेहतरीन ओवर यश के द्वारा। सिर्फ 3 रन का ये ओवर, 19वां ओवर। और ओवर की समाप्ति 19 ओवर के बाद 127 पर 7। आखिरी ओवर बचा है, सिर्फ 6 गेंदे, और देखते हैं कि 140 तक पहुंच पाते हैं सोहम और रविराज। छह गेंदे हैं सोहम और रविराज के लिए। कौशल त्रिवेदी आए आखिरी ओवर डालने। बढ़िया शुरुआत, सोहम ने इस गेंद को जाने दिया। तो मेरे हिसाब से अच्छी रणनीति नहीं है। हर गेंद पर बड़ा शॉट मारने का प्रयास तो होना ही चाहिए। 5 ही गेंदें बची हैं, और पिछले 2 ओवरों में, 1 ओवर और 1 गेंद में 4 से 5 गेंदें डॉट आ चुकी हैं। ये बहुत ही खराब बल्लेबाजी मैं कहूँगा, खास करके जब आपने इतनी अच्छी वापसी की है इस मैच में। कौशल की अगली गेंद, इनका भी आखिरी ओवर है, चौथा ओवर इनके स्पेल का। ये बढ़िया शॉट है, लेकिन यहाँ पर क्षेत्र रक्षक मौजूद है, और दूसरे रन के लिए आ गए हैं यहाँ पर रविराज। 2 रन ले भी लिया आसानी से। तीसरे के लिए आ रहे हैं, जी हाँ, जबरदस्त, बहुत बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट्स। रविराज ने 3 रन पूरे किए। कौशल की अगली गेंद, और ये चौका मिलेगा यहां पर। जी हां, एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज के क्रीज पर रहने का यही फायदा होता है कि अगर
भारी किनारा भी लगे, वो भी बड़ा शॉट और ज़्यादा रन मिलते हैं। देखिए भारी किनारा और वो भी गैप में, से बेहतरीन शॉट हो नहीं सकता है मैच के इस समय में। 7 रन आ गए 3 गेंदों पर, 134 पर आ गया स्कोर। तीन गेंदें बची रविराज को अपना कौशल दिखाने के लिए, और ये बहुत बेहतरीन प्रयास यहां पर कौशल का, जितनी भी तारीफ की जाए इनकी कम है। देखिए क्या जबरदस्त प्रहार था, लेकिन कौशल ने उसे एक हाथ से दीवार की तरह रोक लिया और बहुत बेहतरीन। ये डॉट गेंद हो गई यहां पर, तो कौशल सिर्फ रविराज नहीं, कौशल भी अपना कौशल दिखा रहे हैं। उनका तो नाम ही कौशल है, तो कौशल से भरे हुए हैं वो। जी हाँ, संपूर्ण है कौशल से, कौशल त्रिवेदी। और पिछली गेंद पर हमने देख लिया ये इतना तेज प्रहार था, लेकिन क्या रोका, एक बार फिर से आपको दिखाएंगे। बेहतरीन ये देखिए, और अब लाइव आ गए हैं कि अगली गेंद, और ये बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, और ये 4 रन नहीं, हो गया है 4 रन। जी हाँ, जबरदस्त। कोई क्षेत्ररक्षक वहां पर तैनात नहीं था, होना चाहिए था मेरे हिसाब से। लेकिन बिहाइंड स्क्वायर एक बार फिर से 4 रन अर्जित किए। रविराज जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन ये हरफनमौला खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर हैं इस दल के, और बहुत ही प्रभावशाली खिलाड़ी भी हैं। हालांकि मुझे ऐसा लगा कि इन्हें आज देर से भेजा गया, थोड़ा पहले भेज सकते थे, छठा विकेट गिरा था, थोड़े और रन बन सकते थे। 138 पर 7 है स्कोर। आखिरी गेंद इस पहली पारी की, कौशल आ रहे हैं रविराज को, और ये बेहतरीन गेंदबाजी, अच्छा शॉट भी खेला है, लेकिन 2 रन के लिए आएंगे क्या? जी आ जाएंगे सोहम। और हितेश भयानी कप्तान का बेहतरीन थ्रो, और बच गए। 2 रन पूरे हो गए यहाँ पर, 140 रन पर पहुंच गए हैं 7 विकेट के नुकसान पर। 7 रन प्रति ओवर का रन औसत, और 141 का यहाँ पर लक्ष्य दिया है मुंबई वाइकिंग्स ने वॉरियर लायंस को। बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर सोहम की, जुगल की, रविराज की आखिरी कुछ ओवरों में। और तारीफ करनी पड़ेगी पिनाकी की और आशीष की भी, जिन्होंने अच्छा यहाँ पर योगदान दिया इस पारी में। 141 का लक्ष्य दिया है मुंबई वाइकिंग्स ने वॉरियर लायंस को। और अब करीबन 10 मिनट बाद आपके साथ वापस जुड़ेंगे दूसरी पारी में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।
We are back live in the second innings in this TSL, the Super League match. This is Shalini Gupta, a commentator, welcoming all the viewers and the spectators once again. In this second innings, the chase is on. 141 is the score that the Warrior Lions have to chase. Mumbai Vikings have done well in their first innings after 24 for 4. This is the first delivery. That's a good start by the bowler. Jfsc Tsl, the opening bowler, starts off really well. And we've got Piyush Kevadia and Ankit Balaria. Flamboyant opening partnership again. Starting the proceedings for Warrior Lions. That's a good start. A short of length delivery by Ashish. Another good delivery and he's missed that. So 2 good deliveries to start the innings. Piyush Kevadia, he's a genuine stroke player, wonderful bat to watch. Along with him, Ankit Balaria, the man in form. They've played a really important role in this. Oh, and this time the edge and travels to the boundary like a trace of bullet. The first runs on the board through an edge. Just have a look at that. That was not a bad delivery, but slashed it hard and gets the outside edge and a couple of bounces into the fence. What a start by the Warrior Lions, and Piyush Kevadia is off the mark, and so are the Warrior Lions with that boundary. Just the third delivery in the over. That was slightly outside the off stump, more than the bowler would have liked. He will have to come back within the stumps. This is a good delivery. What a comeback. It's a very good start in the second innings by both the teams. Some really good cricket happening at the Fatima Cricket Ground. And all credit goes to the Jolly Friends Sports Club, a wonderful sporting company, sports event company that organizes a lot of tournaments, not only at this venue but a lot of venues throughout Mumbai. Wonderful tournament, this one of the best in the circuit, the TSL, the Super League as it is known. That's a good shot, and what a stop that is. Wow, this is some really high quality stuff. Brilliant fielding by the fielder at the backward point. Just have a look at that. Stunning bit of work there. That was a very good shot. Oh, and that is some really good stuff by the fielder. The last delivery of the first over. Piyush Kevadia on strike. Jfsc Tsl. Oh, and that's a gem of a delivery again. He's bowling some real gems here. So 4 of the first over, 4 without loss. We'll take a quick break and be back soon. A good over by Jfsc Tsl. Stay tuned, viewers. This is the second over. Raviraj Shetty starting the proceedings, sharing the new ball with Jfsc Tsl. Raviraj Shetty bowling his first delivery in this spell. That's a short delivery pulled really well by Ankit Balaria. He's a brilliant batsman, we all know that already. Could go to the boundary. The first delivery sent packing to the deep square leg region. What a shot that was, a pulled shot by Ankit. Off the mark on the very first delivery phase. He's such an aggressive customer, this guy. Starting off with the boundary.
Next delivery by Raviraj. Oh, and what a pull shot that is! A brilliant one! And that's a huge six, wow! One of the best shots we've seen in this circuit and in this tournament. What a shot that is! Picking it from outside the off stump. Just have a look at that. A brilliant shot. Stunning bit of work there by Ankit Balaria. What a batsman this guy is. What a player. That was some shot. Just have a look at that replay once again. Boy, that is some real high quality batting. Oh, that is a huge one. A stamp of authority on that shot. What a shot that is. A huge six. Wow. Ankit Balaria starts off brilliantly. 2 deliveries he's faced and a boundary and a 6 on the first 2 deliveries. Absolutely stunning bit of work there by the batsman. Raviraj Shetty stunned in his very first over. Coming into bowler's next delivery, Raviraj. Will he come back? Oh, and that's a wide delivery. Probably the pressure mounting on the bowler here. That's the mistake after that. What a shot that was. We'll just show you the replay once again. Just have a look at that. We haven't seen such kind of shot in this entire tournament. This is a special one for sure by Ankit Balaria. He's a special player without doubt. Raviraj coming in with his next delivery. Oh, and he's bowled him. He's cleaned him up. The inside edge does the trick. What drama here. Absolutely brilliant bowling by Raviraj. The pace this time doing the job. Trying to pull that again. He's lost his wicket. Ankit Balaria. Big wicket for the Mumbai Vikings. Wow. And the first wicket is down. And what a wicket to have for Mumbai Vikings. Raviraj Shetty getting his revenge brilliantly. 15 for 1. And he's not happy, Ankit. Could have got that for some runs, but this time the inside edge. Absolutely stunning bit of work there by the bowler this time. The credit goes to him. 15 for 1 in just the second over. Ankit Balaria, the big fish, goes out of the equation. Raviraj Shetty does the trick for his team after being hit for a wonderful 6 and a boundary as well. This is some really high quality cricket happening in the TSL in this match. And Warrior Lions, they've lost their first wicket and a very important one in the context of this game as well. We'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers. Wonderful piece of bowling by Raviraj. What a comeback by him. Santosh Pal with a new batsman. Raviraj coming in. Oh, what a pitch that is, appealing for a caught behind. And the umpire not agreeing to that. Was there an edge? Absolute Jaffa on the first delivery that he faced. Oh, and was that an edge? That was a very close call. You see it in the slow-mo. Absolutely stunning bit of bowling that by Raviraj Shetty. We'll have to look at the replay here. That too in the slow-mo. Oh, and that was so close. You can't comment it from here. That was really close. Stunning piece of bowling by Raviraj Shetty. His tail is up and on fire. The next delivery. Oh, and that's a good one. Another dot. And Raviraj Shetty is back with a bang in this over. What a comeback by him. A wicket and almost getting Santosh Palve also out on the first delivery that he bowled to him. And then a dot. So this is the last delivery of his first over. And that is well played again by Santosh. Needs to be really careful
against this wonderful all-rounder Raviraj Shetty, and Santosh does well here. Survives in this over, and 2 overs have been bowled, 15 for 1. What a start to this second innings by both the teams, and a lot of action in the second over, especially when Ankit Balaria was hitting Raviraj for wonderful shots and a brilliant delivery to get him out as well. We take a quick break and be back, so stay tuned. He was 15 for 1, Warrior Lions after 2. Ashish bowling his second over with a good start. No run taken, played it well towards the point. Piyush Kevadia. Ashish coming to bowl his next delivery. That's a good one. And a single taken. The point fielder does well, but couldn't stop the single. That's a good bouncer, wonderfully bowled by Ashish. And 1 for the over, signaled by the umpire. Such a wonderful piece of bowling. He's a wonderful bowler as well, Ashish. Utilizes his strengths to perfection. This was a very good bouncer, Santosh Palwe. Trying to pull that, not succeeding. This is really good bowling by Ashish Siroya. Oh, and this time another good delivery. So he's not opened the account till now, Santosh Palwe. Not really comfortable at the crease, it seems. He's trying to hit the big ones. He needs to first settle down. He's taken 5 deliveries without scoring a run. And he's an important component of the team, but still, you need to play the basics right whenever you get a chance, no matter what order you're playing in the lineup. Oh, and again doing the same thing. This is not good batting at all, not looking at the deliveries, line and length. Just trying to hit the big one. This will not help the batsman for sure. Wonderful piece of bowling, just 1 of the over till now. 5 deliveries have been bowled. When this time he is done what he was trying to do from a long time, a short delivery, and played really well over the mid-on for a boundary there. 1 bounce into the fence. Just have a look at the replay. Not a good delivery, and that's a good shot. This is what he was trying to do since long, and finally he succeeds. Santosh is off the mark with the boundary, and end of the 3rd over as well. 20 for 1 after 3. A good over by Ashish. We'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers. Raviraj Shetty coming to bowl his second over. On strike is Piyush. That's a good delivery. No run taken. Played straight back to the bowler. No run.
That's a good delivery, a short one and a quick one as well. Piyush trying to pull that, not succeeding. Another dot. They've come back really strongly, the Mumbai Vikings, after being hit for a few boundaries and sixes. A six hit by Santosh Balaria, probably one of the best shots that we've seen in this TSL this year. Could easily be the best six hit by any batsman in this TSL. I've been commentating in a lot of matches. This was a special one by Ankit Balaria, the one he hit. Oh, and this is a good shot. Oh, and he's missed that. A single will be taken, Piyush Kevadia. They will have to stop all these. Not a good effort by fielder at mid-off. Should have been a dot delivery, but gets a single, Piyush. And on strike again is now Santosh Palve.
Fortunately, the batsman is out with a cramp, so Imran Patel comes at the non-striker's end. Raviraj to Santosh Palve. He lets it go this time. That's a wonderful delivery. This is just the 4th over, 21 for 1. Warrior Lions started well but then lost their most impactful batsman, Ankit Balaria. This is the last delivery of his 2nd over in the 4th in the innings. Imran Patel starts off well and the fielder misses that. Easy single. Taken to end the over. 23 for 1 after 4 overs. We'll take a quick break and be back soon. We're back live and Jfsc bowling his 3rd over in his spell. Straight to the captain this time. Played well Imran Patel but no run. In the air this time and in the gap as well. Should be a boundary. That's a good shot by Imran. That was a short delivery and Imran read it really well. For a moment. Oh, and that was really good shot and gets a boundary again, Imran. This is his 1st boundary. And the score reaches 27 for 1. In the air this time, a short delivery again, but just a single. Didn't go to the fielder's hands at mid-on. Oh, and that's a short delivery again. He needs to improve the length. And that's a good save by Raviraj Shetty at long on, just a single. Santosh played it well. Dot delivery, and this is the last one in this over. Oh, and that's a wonderful piece of bowling again. And that's the end of the 5th over, 29 for 1. A wonderful over again by Jfsc Tsl. Good batting by Imran as well. Got a boundary in that over. We'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers.
Vinod Meher bowling his first over. Played well by Santosh Palve, but straight to the fielder at the backward point. No run taken. Dot delivery to start. That's a wide, definitely. The umpire signals that without any hesitation. We are outside the mark. Did get slight bit of swing as well. Meher on that occasion. He needs to bowl within the stumps. That's straight to the fielder, trying to hit the shot, not succeeding. Trying to hit the big one. Oh, and that should have been caught, it seems. Is that a drop catch? We'll have to look at the replay to ascertain that. It was a good delivery. Oh, yes, that should have been taken. That will go down as a drop catch only. I'll show you the replay in the slow-mo. Was there a catch? That was a catch. We're back live. That's a good delivery. Oh, and that's a wide. Slightly harsh by the umpire, I think so. But probably the right decision, and it was swinging while leaving the batsman. And this time, a good comeback. Straight to the fielder at point, no run. Oh, and he almost got him there. Trying to hit the big shot. Imran Patel missing that completely. Wonderful line and brilliant length by Meher. Just have a look at that. Oh, and that was such a nice delivery. Vinod Meher. A beautiful line and length. Oh, and that's a good shot, but straight to the fielder. Does well this time, the mid-off fielder, and that's a good over. Even up when he bowled 2 wides in that, just 3 of the over. It starts his spell nicely. We'll take a quick break and be back soon. 6 overs have been bowled, 32 for 1, and we'll be back with the Hindi commentary. Stay tuned, viewers.
मिथिल आए हैं अपना पहला ओवर डालने और ये बच गए यहां पर कैच होते होते। बढ़िया शॉट था, तेज प्रहार, लेकिन 2 रन ले लिए यहां पर। लेकिन तारीफ करनी होगी यहां पर अमनदीप चड्डा की। और हिंदी कमेंट्री लेकर आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत हुए हैं। ये देखिए, पहली गेंद पर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, और क्या ज़बरदस्त यहाँ पर प्रयास था कप्तान अमन का। जितनी भी तारीफ की जाए कम है। 2 रन मिले यहाँ पर संतोष पलवे को। 7वां ओवर चल रहा है। बेहतरीन मैच हो रहा है फातिमा क्रिकेट ग्राउंड पर TSL में। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, डॉट गेंद, बढ़िया वापसी। और ये बेहतरीन शॉट, और क्या ये चौका होगा? ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा ये 4 रन, लेकिन बहुत बढ़िया क्षेत्र रक्षण, 2 ही रन पर रोक दिया इसे। और अच्छा थ्रो भी, डीप कवर्स के क्षेत्र में बढ़िया शॉट खेला संतोष पलवे ने। इस बार वापस डॉट गेंद। और 1 रन लिया तेजी से इस बार। बढ़िया शॉट, और यहां पर 1 रन आसानी से मिलेगा। एक अच्छा ओवर मिथिल के द्वारा, 6 रन दिए। ओवर की समाप्ति 7 ओवर में 38 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद। एक विराम के बाद वापस जुड़ेंगे आपके साथ। और विनोद मेहरा है अपना अगला ओवर लेकर। अच्छी शुरुआत, 1 भी रन नहीं। बेहतरीन गेंदबाजी यहां पर। इमरान पटेल फिर से चूके। बढ़िया गेंदबाजी एक बार फिर से। जबरदस्त लाइन और दिशा से गेंदबाजी डाल रहे हैं। और ये बड़ा शॉट खेलने का प्रयास इमरान का, अच्छा शॉट है लॉन्ग ऑन पर, लेकिन रविराज ने 1 ही रन होने दिया।
बेहतरीन गेंदबाजी, बच गए यहां पर संतोष पलवे, बहुत जबरदस्त है गेंदबाजी। और ये हवा में खेला हुआ शॉट, क्या आउट होंगे? जी नहीं, लेकिन बहुत बेहतरीन क्षेत्र रक्षण, लॉन्ग ऑफ के सीमा रेखा के पास एक ही रन दिया और एक बहुत ही अच्छे ओवर की समाप्ति, सिर्फ 2 रन दिए हैं यहां पर विनोद ने। 8 ओवर में 40 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, और यहां पर अब 5 का हो गया है रन औसत प्रति ओवर। एक विराम लेकर वापस आपके साथ जुड़ेंगे, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद। मिथिल आए अपना दूसरा ओवर लेके, बढ़िया शॉट, डीप मिड विकेट के क्षेत्र में, एक ही रन। संतोष पलवे हाथ खोल नहीं पा रहे हैं, 21 गेंदों पर 14 रन, और यहाँ पर ये श्रेय देना पड़ेगा गेंदबाजों को, ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं, बड़े शॉट्स लगाने में माहिर, लेकिन यहाँ पर एक रन फिर से लिया इमरान ने मिड विकेट की दिशा में खेलकर। अरे वाइड गेंद, यहां पर थोड़ा सा अच्छा शॉट खेला, क्या है? दूसरे रन के लिए आएंगे यहां पर, स्क्वायर की दिशा में एक ही रन मिला और मिथिल ने बेहतरीन अंदाज में उसे खुद ही रोका, दौड़ कर गए और एक ही रन दिया। 3 गेंदों पर 4 रन हो चुके हैं। और ये वाइड गेंद, तो यहां पर वाइड एक मुश्किल और दिक्कत करने वाला क्षेत्र है मिथिल के लिए। बेहतरीन वापसी और डॉट गेंद, कट करने का प्रयास है इमरान का, लेकिन उछाल मिला वहां पर मिथिल को। ये दोनों बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज हैं, हालांकि गेंदबाजों ने बांध के रखा हुआ है इन्हें। अच्छा शॉट, एक ही रन लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, स्ट्राइक पर संतोष आए हैं वापस। ओवर में 6 रन बन चुके हैं अभी तक 5 गेंदों पर। बढ़िया शॉट, लेकिन अच्छा क्षेत्र रक्षण यहां पर कप्तान अमनदीप का, लेकिन क्या दूसरे के लिए आएंगे? जी हां, 2 रन ले लिए संतोष पलवे और इमरान ने। बेहतरीन यहां पर बल्लेबाजी, 8 रन का ये ओवर और ओवर की समाप्ति 9 ओवर के बाद 48 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। बने रहिए हमारे साथ, हम एक विराम लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ।
10वां ओवर विनोद मेहर का, तीसरा ओवर ये। अच्छी शुरुआत, बढ़िया शॉट, 2 रन के लिए आ रहे हैं यार, रन आउट का एक मौका है लेकिन मानना पड़ेगा, क्या रनिंग बिटवीन द विकेट्स हो रही है संतोष और इमरान के बीच में, और ये 50 रन पूरे हुए इस शॉट के साथ और 2 रन लिए। अर्धशतक पूरा इस दल का, 10वां ओवर शुरू है। बढ़िया शॉट और 1 रन पॉइंट के क्षेत्र में लिया। बेहतरीन शॉट, 4 रन मिलना चाहिए यहां पर, लेकिन जबरदस्त क्षेत्र रक्षण लॉन्ग ऑफ से आए और बहुत बढ़िया शॉट था संतोष के द्वारा और 1 ही रन। अच्छी गेंदबाजी है, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास लेकिन सफल नहीं हुए, 1 ही रन मिलेगा। और ये 53 हो गया स्कोर इस 1 रन के साथ, 10वां ओवर चल रहा है। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास और यहां पर 4 रन मिलेंगे। जी हां, बाहरी किनारा और बहुत ही मोटा किनारा, और जब इनके बल्ले से शॉट लगेगा तो वो तो दूर तक ही जाना है। शॉट थर्डमैन के ऊपर से खेला हुआ ये शॉट, जबरदस्त प्रहार यहां पर 4 रन के लिए। विनोद की अगली गेंद और इस बार बड़ा शॉट खेलने का फिर से प्रयास और ये 4 रन। संतोष पलवे ने हाथ खोलने शुरू कर दिए हैं। बेहतरीन शॉट, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र रक्षक ने अच्छा प्रयास किया लेकिन जबरदस्त प्रहार, बॉटम हैंड के धनी है ये। क्या जबरदस्त बल से इस शॉट को लगाया। 10 ओवर में स्कोर हो गया अब 61 रन, 1 विकेट के नुकसान पर महंगा ओवर साबित हो गया ये। 13 रनों का 1 ओवर। और ड्रिंक्स ब्रेक का निर्देश यहां पर अंपायरों का। एक विराम के बाद वापस जुड़ेंगे आप सभी के साथ, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। संतोष पलवे की बेहतरीन बल्लेबाजी, 22 पर आ गए हैं 25 गेंदों के बाद। इमरान पटेल 14 पर हैं 20 गेंदों के बाद। 61 पर 10 ओवरों के बाद। एक विराम के बाद आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, बने रहिए।
ड्रिंक्स ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपके साथ जुड़ने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सिद्धार्थ आए हैं नए गेंदबाज, स्ट्राइक पर इमरान पटेल, पहली गेंद पर वापस भेज दिया है बल्लेबाज को। बहुत खराब बल्लेबाजी है। जी हाँ, ये शॉट आपको तब मारना है जब आप गेंदबाज को समझ चुके हैं, लेकिन यहां पर बेहतरीन गेंदबाजी है। देखिए क्या करना चाह रहे थे यहां पर, ये बहुत जबरदस्त लेंथ, इस गेंद की लंबाई की वजह से चूक गए इमरान पटेल। बहुत ही खराब शॉट मैं कहूंगा इसे। अच्छा खेल रहे थे और विकेट दे बैठे। जी हाँ, बेहतरीन युवा खिलाड़ी हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा सा चूक गए और अपना विकेट देते हुए एक बार फिर से आपको रिप्ले दिखाएंगे। सिद्धार्थ की बेहतरीन गेंदबाजी, ये देखिए। अमूमन जबरदस्त फ्लाइट देते हैं, लेकिन पहली गेंद ही फ्लैटिश ट्रैजेक्टरी के साथ कराई, थोड़ी सी ये तेज थी। और ये दूसरा विकेट गिरता हुआ 61 के स्कोर पर। और एक विराम लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ। बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद। सिद्धार्थ ने अपनी पहली गेंद पर एक विकेट लेकर यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा दिया है। सिद्धार्थ की अगली गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी। डॉट गेंद खेली जिमेश शाह, नए बल्लेबाज, पिछले मैच के हीरो थे। क्या मैच जिताया था उन्होंने वॉरियर लायंस को। सिद्धार्थ की अगली गेंद, बढ़िया शॉट आते ही देखिए, और बेहतरीन स्वीप। 4 रन मिलने चाहिए यहां पर। और क्या है, चौका है? जी नहीं, बेहतरीन तरीके से पीछा किया संतोष पलवे ने। 2 रन के बाद तीसरे के लिए सोचा तो, लेकिन 2 ही लिए। और जिमेश की तारीफ करनी होगी, आते ही एक्शन में आ गए। इस तरह के ही खिलाड़ी हैं ये। बढ़िया स्वीप शॉट, 2 रन के लिए, और खाता खोला अपना। दूसरी गेंद पर सिद्धार्थ को यहां पर बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी डालते रहना होगा, क्योंकि बहुत प्रभावी ये गेंदबाज हैं अपने दल के लिए। और एक एक गेंद इनकी बहुत कीमती है, तो बहुत सोच के हर गेंद अगर डालेंगे। और जिमेश जैसे बल्लेबाज सामने हो तो आपको सोचना ही पड़ेगा। इतने बढ़िया बल्लेबाज हैं, पिछले मैच में उनका दमखम देखा हमने। और ये बेहतरीन गेंदबाजी। और ये अच्छा शॉट, बैकफुट पर खेला, अच्छी गेंद थी, लेकिन 1 रन आसानी से मिल गया। यहां पर मुझे लगता है सिद्धार्थ को, नए बल्लेबाज को, थोड़ा सा फ्लाइट और देना चाहिए। शायद चूक रहे हैं एक गेंदबाज के तौर पर यहां पर सिद्धार्थ। नए बल्लेबाज को अगर आप फ्लाइट दोगे, तो अगर वो बड़ा शॉट मारने के लिए जाता भी है तो भी कोई हर्ज नहीं है, आप वापस आ सकते हैं। हाँ, संतोष के केस में मैं ये कहूंगा कि जरूर आप बंधी हुई गेंदें रखें, टाइट रखें लाइन, क्योंकि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी संतोष ने शुरू कर दी है। संतोष पलवे बेहतरीन बल्लेबाज, जबरदस्त खिलाड़ी। आज गेंदबाजी नहीं डाली उन्होंने, शायद उनके हाथ में चोट लगी है थोड़ी। और ये क्लीन बॉल, क्या गेंदबाजी है। इसी गेंदबाजी की बात हो रही थी सिद्धार्थ का। ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन ओवर, 10-5 गेम चेंजर के बहुत बड़े यहां पर ये एक विकल्प बन चुके हैं। जबरदस्त गेंदबाजी। और संतोष पलवे भी पेवेलियन की तरफ वापस जाते हुए। जी हां, 2 बड़े बल्लेबाजों को उन्होंने पेवेलियन वापस भेज दिया अपने पहले ओवर में। और 64 पर 3 हो गया है 11वां ओवर खत्म होने के बाद स्कोर। और ये बहुत ही जबरदस्त गेंद थी, इनकी तारीफ करनी होगी सिद्धार्थ, पूरे हकदार इस तारीफ के। ये देखिए, बहुत बेहतरीन
लेग स्टंप उड़ाया है बल्लेबाज का। क्या गेंदबाजी डाली है इस बेहतरीन लेग स्पिनर ने। और एक विराम के बाद वापस जुड़ेंगे आपके साथ, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। 64 पर 3 वॉरियर लायंस 11 ओवर के बाद। मिथिल आए अपना अगला ओवर लेकर। जिमिश, बढ़िया शॉट यहां पर, लेकिन क्या ये कैच होंगे? जी नहीं। और ये बहुत खराब क्षेत्र रक्षण आशीष सिरोया। जी हां, ये तो बहुत ही स्तब्ध करने वाला एक क्षण है। आशीष सिरोया से तो ऐसी उम्मीद ही नहीं कर सकते। ये क्या कर दिया इन्होंने, पैरों के बीच से गेंद चली गई 4 रन के लिए। बहुत खराब ये क्षेत्र रक्षण, और 4 रन मिल गए जिमिश को यहां पर। तारीफ करनी होगी जिमिश की। मिथिल की पहली गेंद पर चौका ले लिया और अच्छा शॉट था। अगली गेंद मिथिल की, बढ़िया कट शॉट सीधे क्षेत्र रक्षक के पास, और ये तेजी से रन ले लिया। तेज बयानी आए हैं, कप्तान बेहतरीन खिलाड़ी हैं और बहुत दारोमदार इस साझेदारी पर। मिथिल की अगली गेंद, और 1 रन के लिए यहां पर आए। दूसरे के लिए भी आ जाएंगे ऐसा लग रहा है। जी हां, आसानी से ले लिया वाइड लॉन्ग ऑन की तरफ। बढ़िया शॉट हितेश बयानी का। पहली गेंद पर कप्तान ने अपना खाता खोला जबरदस्त अंदाज में। और ये बड़ा शॉट, बहुत बड़ा छक्का है ये, जबरदस्त प्रहार। लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला शॉट, देखिए कितना बेहतरीन। हितेश बयानी इसी के लिए जाने जाते हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाज हैं और बॉटम हैंड के बहुत ही धनी खिलाड़ी। जी हां, बड़ा छक्का ये। मिथिल ने फ्लाइट देने का दुस्साहस किया यहां पर, और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा इस बेहतरीन शॉट को छक्के के तौर पर खाकर। जी हाँ, ये बल्लेबाज कोई हल्का फुल्का बल्लेबाज नहीं है, बहुत सोच समझ के इनको गेंदबाजी डालनी होगी। और जबरदस्त कप्तान भी हैं तेज बयानी। एक मजे हुए ऑलराउंड खिलाड़ी, जबरदस्त ऑलराउंडर, गेंदबाजी भी बढ़िया डालते हैं और बल्लेबाजी के तो क्या ही कहने, बहुत लंबे लंबे बड़े छक्के लगाते हैं। और इस बार फिर से हवा में खेला हुआ शॉट, ये भी बड़ा छक्का लग रहा होगा, बहुत बड़ा छक्का है ये, उससे भी बड़ा। अद्भुत बल्लेबाजी है, क्या बल्लेबाज हैं ये। इस बार उतना फ्लाइट नहीं था, लेकिन जो लंबाई है गेंद की वही सबसे बड़ी दुश्मन है यहां पर गेंदबाज की। आपको थोड़ा सा यहां पर खींच के गेंद डालनी है। 2 बड़े छक्के हितेश बयानी के बल्ले से, और ये देखिए 83 पर 3 12वें ओवर में ही रन रेट लगभग 7 का हो गया है। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी है कप्तान के द्वारा, अच्छी गेंदबाजी इस बार, और ये खराब क्षेत्र रक्षण। 1 रन मिल गया आसानी से, क्या रोकनी चाहिए थी,
एक्स्ट्रा कवर्स के क्षेत्र में 1 रन लिया और ओवर की समाप्ति। बहुत ही महंगा ओवर ये, 20 रनों का ये ओवर। 84 पर 3 हो गया इसको। 11 ओवर में 64 रन स्कोर था और अब 84 हो गया। बारह में 84 पर 3। एक विराम लेकर वापस जुड़ेंगे आपके साथ। 7 रन प्रति ओवर का रन रेट हो गया है और अब वापस आएंगे तो अंग्रेजी कमेंट्री लेकर प्रस्तुत होंगे आपके समक्ष। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। सिद्धार्थ आए अपना अगला ओवर लेकर। अच्छी गेंदबाजी और यहां पर रोकना चाहिए था इसे, लेकिन शायद मांसपेशी में खिंचाव आया है सिद्धार्थ के। डॉट गेंद है ये, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी ये है कि क्या इनकी मांसपेशी में खिंचाव तो नहीं आ गया है। ऐसा लग रहा है कि हाँ, क्रैम्प सा लग रहा है। और हमें आज्ञा दीजिए कि हम अंग्रेजी कमेंट्री की तरफ रुख करें अब। You're back with the English commentary. Siddharth bowling his second over. He's bowled a wonderful and a game-changing first over. Oh, and that's a good delivery again. And what a stop that is! Wow. This is the kind of effort that you want from the fielders. Just a single. The short third man fielder doing really well. Pinaki there. Is it Pinaki or? No, that's not Pinaki. Wonderful piece of fielding. Pinaki is the wicket keeper of the team. Wonderful piece of bowling by Siddharth. That's a good delivery and played well by Jfsc, but straight to the fielder at backward point. Not at all. A chance for that single, and he does well by not allowing the batsman to take the single. The fielder there. Siddharth is his next delivery. This is his second over. He's taking 2 wickets in his first. Oh, and that's a quick single. This is really good piece of work there, and probably they'll come back for the second. Absolutely brilliant running by both these players. And Hitesh Bhayani deserves the credit here. He pushed Jfsc for the second. And the captain is totally into action here in this match. Hitesh Bhayani 16 of 6 and came in with a lot of purpose when they lost the third wicket in the second in Siddharth's first over. And since then he hasn't looked back. Another good one. A quick single taken. Jfsc is a real craftsman. Just keeps on ticking the singles. So the pressure is never there on the batting team. And he has the shots as well to hit. And hit the long handle whenever he wants to. He's got a repertoire of shots. Oh, and that's a wonderful delivery, a googly, and he missed that. And his hands are on his head, and why not? That was a wonderful piece of bowling. That's the end of Siddharth's second over, just 5 of the over. 89 for 3 after 13. This match is getting closer with every over. 7.43 is the required run rate, and they are at 6.85 currently. We'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers.
Vinod Meher coming to bowl his last over of his spell. On strike is Hitesh Bani. Oh, he's cleaned him up! What a wicket by Vinod! Brilliant stuff here by the bowler and such a big wicket at such an important time in this match. Just have a look at that. Oh, and not a good shot. He was trying to play across the line. And he's such a wonderful batsman. Why did he play that? Why did he choose to play that shot across the line? We'll show you the replay once again. Not at all a good shot by the captain. Oh, that is such a wonderful piece of bowling. Vinod Meher is on fire. He gets his first wicket in his 4th over. But what an important one. And the timing of the wicket as well. Absolutely important in the context of this game. 13.1 have been bowled. And 89 for 4. A big wicket falling for Warrior Lions. We'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers. Jitesh Vagasi as a new batsman. Vinod Meher coming to bowl his next delivery. That's a good shot. Just a single and starts off well. Coming back for the second. No, they decide against it and that's a good decision. Oh, that's a good shot, but just a single. The long off is in place. He's coming back for the second there. Oh, and probably will not take the second. Jitesh Vagasia. Wonderful match happening at the Fatima Cricket Ground. 6.3 overs remaining. And they need 50 to win exactly. Not a big score to chase, to be honest, but then they've lost 4 wickets, so they need to keep the wickets intact. The runs could definitely come in the later stages. That's a good delivery. It's played wide long to wide long on. Probably will come back for the second. No. Ashish Roy does well there. And a very good throw as well. Vinod coming to bowl his next delivery. Oh, that's a good shot, but is that in the boundary? Yes, that goes into the fence for a boundary. That's such an important boundary in the context of this game. Jimmy Shah probably was not aiming to hit there, but gets a very important boundary, and that's a good shot. That's the 5th delivery of this over, 1 remaining. Just have a look at the replay. Probably he was trying to hit it over the covers, but because he slashed it hard, still scored a boundary on that delivery. You're back live. The last delivery of his spell. Vinod has been brilliant today. And he plays it with soft hands. No run taken. And that's the end of the 14th over. 96 for 4 after 14. A very good spell by Vinod comes to an end. And they need 45 to win in 36 deliveries. Last 6 overs remaining. We'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers.
Siddharth with his next over. What a shot this is. Oh, he dropped it. What has he done? That is a very, very big moment in this match. Just have a look at that. Jfsc Tsl hitting it towards the long one for a big one. And Raviraj Shetty, what has he done today? He's dropped 2 catches. Cannot get simpler ones than that when you're standing at the long on position. This is not a good drop at all. That may hurt them. Just have a look at that. Oh, and that should have been taken. He's a very good fielder and a wonderful player as well, but probably not his day today. This is the second drop catch by him today. That's a wonderful shot, but straight to the fielder. And he's missed that again. Will be a boundary. That's a 4. Brilliant shot. Just have a look at that. Cut really well. Oh, and that should have been stopped. This is really sloppy work by the fielders. A Mumbai Vikings team, not at all. Good stuff. Just have a look at that. Oh, that was such an important catch, and a couple of things which I think it didn't do right was to sit and take the catch. That is not the right way. And then he did not come into the line of the ball as well. Should have tried to take it on his shoulders, standing itself, but he thought of taking it in a more comfortable way, and probably that was the reason the catch got dropped. And adding insult to injury with that boundary. This time in the air, will that be caught? No, it's still in the no man's land. And a couple taken, will he come back for the third? Jfsc, everything is going his way in this tournament till now. Whatever he's touching is just turning to gold. The 100 up in this over. Another couple of runs added to the total. (22/14). What a knock by this brave player, and no wonder why they say fortune favors the brave. He is taking his chances, he's ready to take his chances whenever he comes out to bat. He's a very sensible player, has patience as well when it is required. Oh, and that's a peach of a delivery. What a comeback. And he's really good with those flippers. That was a flipper. The quicker one, and that too going the other way. Oh, that's a good delivery again. That had some bounce, but a single taken easily. Playing it towards backward point. Jfsc is on fire. 23/16. Jfsc Tsl lucky to be still there. A catch dropped, but he needs to stay there. That is what the need of the hour is. He needs to give the strike back to Jfsc, who is in red hot form. Not only in this match, but he just carried on from his previous match. Knock. Another good delivery, and he's played it well. This is really good batting by Jitesh. A single towards long on, and that's the end of the 15th over. The score is 105 for 4, 7 runs per over. Exactly is a run rate at what they are playing right now. And we'll take a quick break and be back soon. Stay tuned, viewers.
Raviraj Shetty coming into bowl. He's got a chance to redeem himself. He's bowled well but has dropped a catch or a couple, but he has the ability to turn this match around once again with his bowling. On strike is Jitesh Vagasia, 16th over, starting. Raviraj bowling his third. That's a wonderful shot. The first delivery he faces. Makes some room for himself. And that's a boundary. What a shot that is. Brilliantly played towards the deep covers. Just have a look at that. Through the covers. The sweeper tried his best to stop that, but that was a very good shot. Raviraj with his next delivery. That's a good one, and oh, what a stop that is. And that is what I was mentioning. You cannot keep this man out of the game at any point in the match. Just have a look at that. Nicely played by Jitesh. What a wonderful stop with just one hand. Brilliantly played by Jitesh, but no run. Dot ball. He's playing really well. Jitesh Vagasia 8 of 5. Jimmy Shah 23 of 16. Raviraj. Oh, and that's a wonderful shot. That's a boundary. What a shot that is. A cracker of a shot. Straight down the ground. Just have a look at the replay. One of the best shots that we've seen today. What a shot that was. Comes down the track and oh, and probably one of the best shots of the evening, in my opinion. Brilliantly played straight down the ground. No chance for Jfsc Tsl there. You have to give it to the batsman here. Coming to bowl is next delivery. 2 boundaries have been scored. Jitesh is playing a wonderful knock here. He's 13 of 8. Played well this time towards the long on for a single. So an expensive over by Raviraj. Nothing going his way since few overs. 9 runs of the 4 deliveries. He needs to come back. He has that potential. He's a champion cricketer. We all know that. It's just that the opposition is playing really well against his bowling. Oh, what a shot that is. Could be another boundary. There's a fielder out there. Just a single. And a good attempt by the fielder as well. Good effort by the batsman and the fielder. The bowling was also good on that occasion. Slightly short of length, and that is what you need to bowl, but within the stumps. You need to cram the batsman for room, which Raviraj unfortunately has not been able to do so in this over. But Jitesh Vagasia, what a shot that was, straight down the ground for a boundary. One of the best we have seen today evening in this match. That's a good shot again, and this time straight to the... Oh, and he's missed that! You can't do that. The captain missing a simple one and a single taken again. And that's the end of the 16th over. 10 of that over. 11 of that over, I beg your pardon. The score is 116 for 4 after 16. They just need 25 to win in 24 deliveries. And we'll take a quick break and be back soon. We'll be back with the Hindi commentary now. Stay tuned, viewers. 25 to win off 24 for Warrior Lions to win this match.
सिद्धार्थ का अगला ओवर, 17वां ओवर शुरू हुआ है, इनका चौथा ओवर है ये, आखिरी ओवर इनके स्पेल का। और एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हिंदी कमेंट्री लेकर प्रस्तुत हुआ हूं मैं। 25 रनों की दरकार यहां पर 23 गेंदों पर। 23 पर 25 तो कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है, लेकिन चमत्कारिक करना पड़ेगा कुछ यहां पर मुंबई वाइकिंग्स के गेंदबाजों को। क्षेत्ररक्षण बहुत खराब रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। दोनों ही दलों का क्षेत्ररक्षण आज बहुत ही लचर रहा है। और ये बेहतरीन गेंदबाजी, कैसे बच गए यहां पर जितेश, तारीफ करनी होगी सिद्धार्थ की। देखिए बढ़िया गेंदबाजी, जी हाँ बढ़िया, अच्छी गेंदबाजी, बच गए यहां पर जितेश वगासिया। 14 पर हैं 10 गेंदों के बाद 140 का स्ट्राइक रेट। बेहतरीन बल्लेबाजी और क्या शॉट्स लगाए हैं। सिद्धार्थ की अगली गेंद, और इस बार भारी किनारा और एक भी रन नहीं। बेहतरीन क्षेत्ररक्षण। सिद्धार्थ की अगली गेंद, जबरदस्त गेंदबाजी, तेजी से एक रन ले लिया लेकिन इस बार जिमेश ने। तारीफ करनी होगी यहां पर जिमेश की भी। इस खिलाड़ी में मुझे सबसे अच्छा ये लगता है, सबसे बड़ी विशेषता इसकी लगती है कि इसे अपने विकेट को देना पसंद नहीं है और उसके लिए बहुत मेहनत भी करता है ये खिलाड़ी। तारीफ करनी होगी, अपने विकेट को वैल्यू देता है, ये बहुत जरूरी और बहुत ही आवश्यक किसी भी बल्लेबाज के लिए। जी हाँ, स्वागत करना चाहेंगे हमारे साथी कमेंटेटर पार्थ का। आज बहुत सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है कि पार्थ भी आए हमारे साथ कमेंट्री करने। और पार्थ, क्या लगता है आपको इस मैच में अब ज्यादा कुछ बचा है या नहीं बचा है? जिमेश की बल्लेबाजी देखकर तो लग रहा है कि बहुत जल्दी ये मैच खत्म हो सकता है। जी हाँ शालिन, जैसे आप कह रहे हैं, जिमेश को अगर हम क्रिकेट के टर्मिनोलॉजी में बोला जाए तो ग्राफ्टर कहेंगे। बहुत ही अच्छा ग्राफ्टिंग करते हैं, खुद के विकेट को जैसे आपने बोला बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं, शांति से खेलते हैं, संयमता से खेलते हैं। सो लक्ष्य तो पार कर सकते हैं, बट जिमेश का विकेट बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है यहाँ पे। जी हाँ, बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही जबरदस्त अंदाज में आपने ये चीज सभी दर्शकों और हमें बताई है। सिद्धार्थ की अगली गेंद, आखिरी गेंद इनके स्पेल की। और ये देखिए, यही खासियत है इनकी, कभी भी संयम नहीं खोते हैं और आसानी से एक रन ले लिया। और सिद्धार्थ का एक अच्छा स्पेल यहां पर खत्म होता हुआ, लेकिन पलरा अभी भी वॉरियर लायंस का ही भारी है। 17 ओवर में 120 रन 4 विकेट के नुकसान पर, और 21 रन चाहिए 3 ओवरों में। ये देखिए बेहतरीन स्कोर कार्ड आप सभी दर्शकों के समक्ष। अभी भी कौशल त्रिवेदी, प्रणय जैन, नरेश मनोज जैसे बल्लेबाज आना बाकी। जितेश वगासिया बढ़िया खेल रहे हैं 15-13 गेंदों पर। जिमेश शाह 27-19 गेंदों पर। संतोष पलवे ने अच्छी बल्लेबाजी की 26-27 गेंदों पर। और हितेश भयानी ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, 17 उन्होंने रनों का योगदान दिया 8 गेंदों पर सिर्फ। और ये देखिए गेंदबाजों के आंकड़े, विनोद मेहर की जितनी तारीफ की जाए कम है। और सिद्धार्थ ने 4 ओवर में सिर्फ 21 रन देकर 2 विकेट लिए। जबरदस्त गेंदबाज है ये बंदा, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं ये। ये मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन पलरा अभी जो है वॉरियर लायंस का ही भारी है। तारीफ करनी होगी इस दल की। आशीष सिरोया आ रहे हैं, आज इन्हें विकेट नहीं मिला है। पार्थ, कुछ कहना चाहेंगे आप? बेहतरीन गेंदबाज हैं, ज्यादातर स्ट्राइक बॉलर होते हैं ये। इसमें एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि द क्वालिटी ऑफ बैट्समैनशिप जो बोलते हैं, बहुत ही बेहतरीन शॉट यहाँ पे, शॉट और वाइड, और ये बाउंड्री, बहुत ही बेहतरीन शॉट था ये। रिप्ले देखना चाहेंगे यहाँ पे। जी हाँ, जितनी तारीफ की जाए इनकी
उतनी ही कम जिमिश। ये उच्च स्तरीय क्रिकेट खेलते हैं। ये देखिए बेहतरीन अंदाज में ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद और कट किया उसे। कोई मौका नहीं है किसी भी क्षेत्र रक्षक के पास। और आशीष सिरोया वापस आए हैं। बढ़िया वापसी यहां पर, लेकिन यहां पर विकेट कीपर से चूक हुई। पिनाकी इस बार चूक गए और 1 रन मिल गया। एक रन की बहुत ज्यादा कीमत है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये मैच पूरी तरीके से वॉरियर लायंस के पक्ष में आ चुका है। अब सिर्फ औपचारिकताएं रह गई इस मैच को खत्म करने की। सिर्फ 16 रनों की आवश्यकता और 16 ही गेंदें बची हैं। तो 16 पर 16 जब आपके पास 6 विकेट हो और जिमिश शाह जैसे बल्लेबाज हों क्रीज पर, कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। और एक बार फिर से जिमिश का बल्ला चलता हुआ, जबरदस्त खिलाड़ी जितेश वगासी ने आगे बढ़कर शॉट खेला और 1 रन मिलेगा यहां पर। मिड विकेट पर क्षेत्र रक्षक ने उसे रोका, लेकिन 1 रन नहीं रोक पाए। अपार्ट मुंबई वाइकिंग्स के दल के बारे में क्या कहेंगे? इस टीएसएल में थोड़ा सा चूके हैं वो। जो मैचों को खत्म करने का एक होता है तरीका कह लीजिए, या एक खत्म करने की शैली होती है, उसमें इस बार थोड़ा सा, एक बार फिर से बाहर की गेंद और अच्छा शॉट। 1 ही रन मिलेगा, हालांकि वाइड हो जाती नहीं खेलते तो। दूसरे रन के लिए आ रहे हैं, फिर से चूक हुई। क्षेत्र रक्षण आज का बहुत लचर रहा है दोनों ही दलों का। लेकिन आप अगर 140 का स्कोर बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको हर रन बचाना होगा। और इस बार बहुत बार चूक हुई है क्षेत्र रक्षकों से। पार्थ, हमारे सवाल पर वापस आते हैं। मैं ये जानना चाहता था कि मुंबई वाइकिंग्स जैसे बेहतरीन दल के बारे में आपका क्या कहना है, जिस तरह से इस बार वो मैचेस खत्म नहीं कर पाए हैं। बहुत से मैचेस उन्होंने इस टीएसएल में गंवाए हैं सिर्फ अंत क्षणों में। वो सिर्फ एक मैच की दूरी है कह सकते हैं। जस्ट वो कॉम्बिनेशन उनको सही मिल जाए, जिससे पूरा उनका टीएसएल चेंज हो जाएगा। वो एक सही क्षण, वो एक सही मैच, वो एक सही डिसीजन, पूरा उनका टूर्नामेंट बदल सकता है। एंड डेफिनेटली ऐसे टीम्स अभी दूसरे टीम्स के लिए स्पॉयलर्स हो सकते हैं, जो दूसरे टीम्स को असिस्टेंस चाहिए बाय गेटिंग अ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। मुंबई वाइकिंग्स से वो अभी एक्सपेक्टेशन रहेगा। यहां पे आशीष वापस आते हुए, स्लोअर बॉल कंप्लीटली मिस किया। ये सब कुछ मिस हो गया है। 22 का इशारा अंपायर का। जी हाँ पार्थ, कभी कभी समय भी आपका साथ नहीं देता है। मुंबई वाइकिंग्स के बारे में शायद इस बार यही हमें सबसे सही बात लग रही है कि समय उनका साथ नहीं दे रहा है। कप्तान बहुत बेहतरीन है उनका, मनदीप चड्ढा, जबरदस्त खिलाड़ी और बहुत बढ़िया लीडर भी हैं टीम के। एकजुट करके रखते हैं टीम को और अपने दल को। लेकिन तारीफ तो यहां पर वॉरियर लायंस की बनती है। 130 पर 4 हो गया इसको और 18 ओवरों में 2 ओवर में 11 रन चाहिए। एक विराम लेकर वापस जुड़ेंगे आप सभी के साथ। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। वापस आ गए हम एक बार फिर से लाइव इस मैच में। 11 रनों की आवश्यकता। 19वां ओवर डालेंगे खुद कप्तान अमनदीप। और आज का मैच ये जीत सकते थे मुझे लग रहा है, लेकिन क्षेत्ररक्षकों ने साथ नहीं दिया अपने गेंदबाजों का। और जितेश वगासिया का वो कैच था, वो शायद आज के मैच का गेम चेंजिंग मोमेंट जिसे कहते हैं, जिससे एक ऐसा क्षण जिससे मैच पलट जाता है। शायद वो ड्रॉप कैच इनमें से एक था, क्योंकि उसके बाद रन भी ज्यादा नहीं चाहिए थे और जितेश वगासिया ने जबरदस्त बल्लेबाजी भी की उसके बाद। 16 पर खेलने 15 के बाद 15 गेंदों पर 16, 100 के ऊपर स्ट्राइक रेट। एक वक्त 140 का स्ट्राइक रेट था, कम हो गया है। बांध के रखने की कोशिश की है वॉरियर लायंस ने जितेश को। हालांकि जिमिश उतना ही ज्यादा खुलकर खेल रहे हैं।
अमनदीप चड्डा अपनी पहली गेंद डालने आते हुए, और ये अंदरूनी किनारा, और क्या है, चौका है। जी हाँ, यही गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से डालेंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छी गेंद होगी, लेकिन यहां पर मिड स्टंप, देखिए मिडिल स्टंप से लेग स्टंप की तरफ जाती हुई गेंद, और अंदरूनी किनारा लेकर 4 रन की तरफ फाइनल की सीमा रेखा के पार चली गई, और ये चौका पहली गेंद पर। 134 हो गया स्कोर, सिर्फ 7 रन बचे हैं इस मैच को जीतने के लिए वॉरियर लायंस के लिए। मात्र एक औपचारिकता ही रह गई है ऐसा लग रहा है इस मैच में। अब कप्तान अमनदीप की दूसरी गेंद, और ये अच्छा शॉट, और ये 2 रन के लिए आना चाहेंगे लेकिन नहीं, जबरदस्त क्षेत्र रक्षण रविराज का, 1 ही रन। और स्लोअर डिलीवरी डालने का प्रयास था, हल्की गेंद, धीमी गेंद, लेकिन शायद हाथ से छूटी उनके गेंद। 1 रन लिया आसानी से जितेश ने, लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलकर 20 पर आ गए 16 गेंदों के बाद। जिमेश शाह 34 पर 23 गेंदों के बाद 150 का स्ट्राइक रेट। जबरदस्त बल्लेबाजी जिमेश के द्वारा, क्या गेंदबाजी है, वाह, जबरदस्त वापसी। यहां पर यही लाइन डालनी है आपको, दिशा ऑफ स्टंप के बाहर ही रखनी है। अमनदीप की अगली गेंद, खराब गेंद, और ये 4 रन मिलेंगे यहां पर। बहुत ही खराब गेंद, ये फुल टॉस, छक्का है, ये बड़ा छक्का है, और ये मैच की समाप्ति हो गई इस छक्के के साथ। क्या जबरदस्त प्रहार इस मैच को खत्म करने के लिए। जितनी भी तारीफ की जाए इस बल्लेबाज की उतनी कम। जिमेश बहुत ही सही अंदाज में इस मैच को समाप्त किया है, और 141 का विजयी स्कोर अर्जित करते हुए यहां पर वॉरियर लायंस सिर्फ 18.4 ओवर में 8 गेंदों पहले ही इन्होंने यहां पर मुंबई वाइकिंग्स को परास्त किया इस मैच में, और 6 विकेट से मैच जीत लिया। हम धन्यवाद देते हैं अपने सभी दर्शकों और श्रोताओं का, इन्होंने इस मैच और इस पूरे प्रतियोगिता में हमारा समर्थन दिया है। एक बार फिर मैं आपका कमेंटेटर शालीन गुप्ता आप सभी से अलविदा कहता हूं। टीएसएल के अगले मैच में जल्दी आपके साथ वापस जुड़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए और शुभ रात्रि।